Hello students, welcome back in our digital grammar classes. Till here we have studied adjective and now we are going to start our next topic is preposition. What is preposition? A preposition is preposition, that is a word placed before a noun or pronoun to show in the relation the person or thing denoted by it stand in regards to something else. वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं और दो वस्तुओं का संबंध बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं. Besides this, students, the preposition joins a noun to another noun, a noun to pronoun, a noun to verb. Kinds of prepositions. Simple preposition. Examples: at, by, for, from, in, of, on, out, through, till, to, up, with. Compound preposition. A compound preposition which are generally formed by prefixing a preposition to noun, an adjective or an adverb. कंपाउंड प्रीपोजिशन जनरली नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगाकर बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स: अबाउट, अबाव, अक्रॉस, अलोंग, एमिड, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनेथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनेथ, विदिन, विदाउट. Phrase preposition. Group of words used with the force of a single preposition. Example: there is a garden in front of my school. Here we are using students group of words in front of. Some other examples are according to, in place of, along with, because of, on behalf of, instead of, etc. Now we are making sentences of phrase preposition. According to me, you can learn English. Students, according to is a preposition. मेरे अनुसार तुम इंग्लिश सीख सकते हो. I attend the party in place of राहुल. मैंने राहुल की जगह पर पार्टी अटेंड की है. Snake is crawling along the river. स्नेक जो है रिवर के साथ साथ क्रॉलिंग कर रहा है. I could do it because of your cooperation. मैं तुम्हारे कॉपरेशन की वजह से ही ये कर सका हूँ. I welcome you all on behalf of सुभाष इंग्लिश स्कूल. सुभाष इंग्लिश स्कूल के बिहाफ पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. Instead of learning French, he learnt English. उसने फ्रेंच की बजाय इंग्लिश सीखी है. Firstly, we are doing simple preposition. At is used with a specific location like at 23 Down Street, a point in time at 6 o'clock, a condition at peace, at war, at rest, at activity, at work, at school, at play. Two words: look at someone, wave at someone. Next is in. In is used for place of thoughts of as an area, like in London, in India, within a location, in the room, in the building, by means of speak in English. In simple language, we can say that in indicates us the ending of a specific time period. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बताता है. एग्जाम्पल: आई विल रिटर्न इन एन आवर. मैं इसको 1 घंटे में रिटर्न कर दूंगी. आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट इन दिस वीक. मैं इस हफ्ते में ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगी. नेक्स्ट इज इनटू. इनटू इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. व्हेन वी आर डूइंग समथिंग. स्टूडेंट्स, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तब हम इनटू का यूज करते हैं. एग्जाम्पल: आई एम गोइंग इनटू द क्लास. मैं क्लास में जा रही हूँ. आई एम pouring वाटर इनटू द जार.
मैं जार में पानी डाल रही हूँ. Here students, why are we using into? Because we are doing the work here. If I'll make the sentences of in, then I'll use I am in the class. But here I am making sentences of into, so I am going into the class. What is the difference in and into? So मैं class में यदि already present हूँ, then I will use in. I am in the class. But यदि मैं class में जा रही हूँ, then I am going into the class. The next is about. About means के बारे में. The first sentence is, this is a story about my dream. यह story मेरे सपने के बारे में है. He is about 10 years old. वह लगभग 10 साल का है. On is used when anything is touched for surface. जब कोई चीज किसी surface पे touch हो. And it is also used for day. और ये day के लिए भी use किया जाता है. For example, I am keeping my book on the table and I'll come on Monday. Examples: touching the surface of, on the table, on the wall. A certain day and date. On Sunday, on the 6th July. A certain street, on West Street. About, a book on grammar. A state of condition, on strike, on fire, on holiday. By means of, live on a pension, shows on television, on food. So students, till here we have studied kinds of prepositions, and the remaining prepositions we will study in next video. So till then, have a nice day.